हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्सराजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। सो दोस्तों, आज हमने देखा एक बहुत ही फ्लैट ट्रेड। फ्राइडे को भी वही फ्लैट ट्रेड, आज भी वही फ्लैट ट्रेड, सिर्फ 4 पैसे रेंज में ऊपर नीचे करता रहा। टॉप बना था 82.47 का और बॉटम बना था 82.42 का। तो इसी रेंज में 4-5 पैसे के रेंज में पूरा दिन ये जाता रहा। और जितने लोगों ने ऑप्शंस लिया था, मैंने भी ऑप्शंस ख़रीदा था पहले, बट ऑप्शंस में बहुत सारा प्रीमियम को काट लिया ट्रेडर्स ने। ऊपर के साइड हो या नीचे के साइड, दोनों साइड पे ट्रेडर्स ने प्रीमियम काट लिया। शाम को 5:30 बजे दोस्तों, आज सीपीआई डेटा आया है इंडिया का, और इंडिया का सीपीआई डेटा आया है करीबन 4.26 के पास, जो प्रिटी मच जो जितना एक्सपेक्टेड लेवल था। इंडिया का जो इन्फ्लेशन लेवल है 4% के नीचे लाने की कोशिश कर रही है, और हम करीबन 4.26 के पास हैं, जो इंडिया के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, इंडियन करेंसी के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। पर दोस्तों, कल शाम को यूएस का भी सीपीआई डेटा आने वाला है, और उसके बेसिस पे मूवमेंट होगा। तो वो क्या मूवमेंट होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर अब देखें तो करंटली अभी सोच देख रहे हैं कि गोल्ड गिर गया है दोस्तों, गोल्ड नीचे आ गया है। अगर गोल्ड अगस्त सीरीज़ का 1955 के नीचे आता है दोस्तों, तो डॉलर अच्छी मूवमेंट अप मूव दे सकती है। अगर गोल्ड यही रेंज में रह के सुबह तक 9 बजे तक वापस 1975 तक वापस आ जाता है, तो फिर हम यही रेंज में रहेंगे दोस्तों। कल भी पूरा दिन कोई ट्रेड मिलने की चांसेस नहीं होगा। तो ये है मेरा विश्लेषण, जो ये है मेरे फंडामेंटल्स जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो इसके आधार पे या इसके बेसिस पे कल के लिए भी ट्रेड प्लान बनाएंगे। कल के लिए मेरा ट्रेड प्लान होगा, नीचे की तरफ मैं जो देखूंगा वो है 82.41। ये सबसे नीचे लेवल है दोस्तों। इस लेवल से ही रिवर्सल आया है। मैंने फ्राइडे भी बोला था, कल भी एनालिसिस में बोला था कि रिवर्सल्स वॉच कीजिए। यहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड लग रहा है, और अगर एक भी न्यूज़ डॉलर के फेवर में आता है तो सडन अपमूव आने की चांस है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए थोड़ा देख के खेलिए। जो भी डाउन ट्रेंड के लिए बेट कर रहे हैं पी पे, या शॉर्ट करना चाहते हैं, फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं, या फ्रेश ऑप्शन पोजीशन बनाना चाहते हैं, थोड़ा देख लीजिए। 82.41 के नीचे एक इम्पॉर्टेंट, नीचे उसके नीचे ही एक सपोर्ट है जो है 82.38। अगर ये ब्रीच होता है दोस्तों, तो फिर आपके नीचे के लेवल्स आएंगे जो है 82.31 और 82.27। ये नीचे के, इतना नीचे का लेवल है दोस्तों, ठीक है। अगर वो भी 82.41 ब्रेक होना चाहिए, और 82.38 ब्रेक होके कंफर्मेशन देना चाहिए। कभी कभी 82.38 के पास आएगा और फिर से रिवर्सल ले लेगा। तो इस आधार पे अगर रिवर्सल ले लिया तो आपका प्रीमियम कट जाएगा फिर से। तो नीचे की तरफ थोड़ा देखिए दोस्तों, और आराम से ट्रेड लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए कल, ठीक है। ऊपर के तरफ दोस्तों, अभी भी मैं वही लेवल देख रहा हूँ। ऊपर की तरफ मैं 82.47 देख रहा हूँ, बट 82.47 पे मैं बाइंग नहीं करूँगा। मैंने आज क्लियरली बोल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे, हम बाई करेंगे तो वो होगा 82.53 के ऊपर। उसके नीचे बाई करने का या उसके नीचे कुछ कोई भी ट्रेड लेने का यूज़ हो नहीं रहा है दोस्तों, प्रीमियम कट जाएंगे। तो मेरा कल 82.53 के ऊपर बाय रहेगा। पहला टारगेट देखूंगा 82.58, और दूसरा टारगेट उसके ऊपर देखूंगा 82.65। ठीक है दोस्तों, ये मेरा अपसाइड टारगेट्स है। और डाउनसाइड में टारगेट्स जो है वो मैंने दिया है 82.41 के नीचे। कॉन्फर्मेशन लीजिए 82.38 ब्रेक होने के बाद, तब आप 31 और 82.27 देख सकते हैं। ये है मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान। आप यही लेवल्स मार्क कर सकते हैं और कल ट्रैक करके देख सकते हैं, और मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ बोल के। जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल ऑप्शंस चूज़ कीजिए उसमें, क्योंकि जब भी मैं एनालिसिस पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप एनालिसिस देख सकोगे, अगले दिन ट्रेड के लिए प्रिपेयर्ड रह सकोगे दोस्तों, ठीक है।
अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग टाइम पे अपडेट्स देता हूँ और कभी कभी एक फ्री ट्रेड भी दे देता हूँ, तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अब हम करते हैं एनालिसिस इंग्लिश में। नाउ विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, welcome to Forexraja, your channel for USDINR analysis. So friends, as you can see, today has been the one of the most boring day. In fact, right from Thursday and Friday and even today, USDINR has just been in a very narrow range. The downside range was 82.41 and the upside range 82.47 or 46. Sorry, downside range 82.42, upside range 82.47, hardly 5 paisa range. It's just been oscillating and there's been no movement. So technically, anyone who has, including me, I took some positions on the buy side, but unfortunately it didn't materialize and premiums were eaten. Even on the sell side, when we tried to take a trade, it did not materialize much and even premiums over there were eaten. So I did take a buy call and a sell call, but on both the sides it was not a favorable day for us. So the reason is one, US CPI inflation data is going to come tomorrow. After that is followed by the US monetary policy decision, whether the interest will be raised or not. That's another decision. Today India's inflation data has come out at 5:30, which is and the inflation has come out really good, which is at around 4.26 as compared to a target that they had was around 4%. So inflation, while inflation is on the lower side, the second thing that you have to observe is whether there is demand for the kind of output that is being produced. Because if inflation is low, the cost of goods or the cost of materials should come down. Let's say cost of, whether it's cost of your products or the groceries that you buy, I don't see a reduction in that. I don't see reduction in petrol prices or the diesel prices. They still remain to be higher. So is this number something that is pretty much acceptable? Is what we need to watch. The impact after the news came of the inflation is that we see that the gold has fallen down. The August gold futures has fallen down to 1965 levels. And if it falls below 1955, then dollar can have an upper hand, which we need to see tomorrow, friends. However, even tomorrow will be a very flat day. That's what I'm assuming. It'll be very range bound. So anyone who wants to enter into options or in any trade should advise, I advise caution to them and to take trades slowly, in a less quantity rather than burning out your capital. Let's see what's the trading plan that I have for tomorrow. This is going to be my trading plan for tomorrow, friends. Let me go on the 1 hour chart, right? And let me bring in some range over here. All right, friends, tomorrow I'll be watching out for an important level at the bottom, which is 82.41. Now, if spot goes below 82.41, then on the downside, as I told you in my yesterday's video, the downside looks limited. Even in my day before video, I told you the downside is looking pretty much, sorry friends, the downside is looking pretty much limited for this chart, because we have two major events coming up. So I will not be focusing too much on the downside, or I will not be trying to take, I'll not try to take a trade on the downside. Okay, instead what I would rather do is I will focus on where is the downside or what's the level of the downside. So for example, in this 1 hour chart, friends, I just want you to mark this level. The first level is coming to 82.41. Okay, and if spot goes below 82.41, then wait for this level, which is 82.38. This is the immediate support. Wait for this level to get broken, then you can take a downside trade. Your first target will be 82.31, and below 82.31 your second target that you can look forward is 82.27. Okay, so this thing you remember, once spot goes below 82.41, wait for spot to go below here, because here again you can see a reversal and your trade can go negative, or it can go in a reverse direction. So just wait for 82.38, then only take the downside trade.
On the upside, friends, if the decisions on inflation come in the favor of dollar, on the upside, I'll be watching out for 82.47. However, if spot moves above 82.47, I still will not buy. I've made this clear in my Telegram channel today. The buying level for me is only 82.53. Only if spot goes above this, it's better to buy. Under this, don't even take trade, and I really don't want to burn any of my capital. I rather not take any trade. If spot is above 82.53, the next target you can look forward is 82.58, and above 82.58, friends, we will test again 82.65. All right, so these are the upside targets, and I've also given you the downside targets if spot goes on the downside. Please mark these levels, track these levels tomorrow, and in the comments let me know if the market did behave as per the levels that I have shared with you here or not. For those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the notification button, the bell icon over there, and choose all over there, because every day I upload my analysis video, and if you have pressed the bell icon, then you will be notified about my analysis and you will never miss my analysis and always be prepared for the trade the next day. You can join me on my Telegram channel absolutely free, friends. The link is right below the description. In Telegram, on the trading hours, I keep giving updates, as well as I do share some free trades in the Telegram channel. So thank you so much, friends, for watching. We'll see you in the markets tomorrow. Bye bye.